तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप लोग सुबह से हैं, अच्छा लग रहा है सुबह से बैठ के काम करना। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो थोड़ा अभी इसकी हैबिट होनी चाहिए कि मतलब यू कुड हैव सिट, इतना लंबा सिटिंग कर सकते हैं प्रोडक्टिवली एंड ऐसे ही मतलब ऐसे लगना चाहिए कि कुछ काम किया है खास। दैट वाज द पर्पस and so far has this discussion helped you? Fine. So now we will be discussing GS2 paper and I will be discussing Polity IR and Kokup sir will be discussing the governance with me. Fine. So I'll be first starting with the Polity section because maybe you should not get bored with me. Huh? Okay, ठीक है. If you want, अच्छा वहां मैं बुला लूंगी. Okay. So now, as far as this year's GS2 paper is concerned, and all papers, I feel that they are comparatively easy than the previous years. Comparatively easy means a lot of technical specific facts etc are not asked and overall emphasis has been shifted more towards conceptual type of questions. So in a way it is easy also, but when it becomes easy for all, then it becomes challenging how my answer differs in the sense I should get more marks. So everything has its pros and cons, but at least looking at the question and finding questions are comfortable gives a positive psychology that at least I know. So first is you should know the paper and then comes the quality thing. So what I feel is for mains, continue developing your command over language and clarity over concepts. So now let us start with this GS2 paper. This is इसको कुछ आगे बढ़ाना, हैंग हो रहा है. नहीं, पेपर ये नहीं है. 23 वाला पुल ये नहीं ऊपर जा रहा है. हाँ, ओके. So the first question is, first खोल दो यहाँ से. First question is ऊपर और ऊपर. Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy. And the question is comment on this. Comment means what is your take on this? How do you see this statement? Fine. Completely agreeing, disagreeing, partially agreeing. Because comment in Hindi is called tippadi kijiye. Fine. So you do tika tippadi. We are very good at commenting on others. Fine. So we are good at commenting on social media also. So now let us see. So how you should look at it. First of all,
start deconstructing the question. Once you deconstruct the question, meanings start flowing out. तो क्वेश्चन का in mains learn how to deconstruct it. तो deconstruct करने का मतलब है embedded meanings को समझना और उसके फाउंडेशन तक पहुंचना. तो अगर पहले क्या है, कमेंट सेकेंडरी है, पहले इसको नहीं, पहले इसको ओपन अप करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस is a prerequisite of democracy. So here there are two things, judicial independence and democracy. And you know that for democracy judicial independence is important. In what way? Checks and balances. Fine. So now should we start discussing with judicial independence or should we start discussing with democracy? Democracy. So democracy is the context in which they are asking this question. So it is a prerequisite. If there is judicial independence, it will result into democracy. So you, in your first paragraph, you should write something on democracy so that it provides the grand idea under which you are discussing this. So sometimes when you write answer or you give answers in interview, oral or written, whether thought process has been done or not, you need to show that. Fine. That is why what happens, suddenly students see the question, they will not decide, they may start writing on judicial independence, not. So take time, write less, but decide. Because if you will not decide the context in which rest of the things to be discussed, flow will not come. It will normally the style of writing is students will write judicial independence, they will write democracy, in third paragraph they will write the relationship, but that becomes disjointed. You have to understand what will be comforting for the person who is reading it. So he should finish things in a go. Fine. First thing is that. So that is why you always decide the context. And you know democracy, we will discuss something which is important for democracy. Now democracy can be discussed in many ways. You have to look for that aspect of democracy that synchronize with judicial independence logic. Fine. So judicial independence ensures that people. Now comment, अगर आपसे comment कहा जाए, क्या comment आपको समझ में आ रहा है? comment में आप क्या लिखते हैं? ये तो समझ में आ रहा है दोनों का संबंध है, बोथ आर रिलेटेड. इस पे कमेंट क्या करेंगे आप? One side there is, like, there are two sides of the coin. At one side there is this judicial independence used by the judiciary to check the other two organs. But there is another side where there is judicial activism. How we interpret it. So, but that is not reaching anywhere. पहले आप क्वेश्चन की रीडिंग करिए, तब जाके आप कमेंट करेंगे. कमेंट ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड इंडिपेंडेंस इज अ प्री-रेक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी. कमेंट किस पार्ट पे आएगा?
कमेंट आएगा या ये नहीं होगा, ऐसे आप नहीं लिख सकते कि नो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट और यस, तो आपको स्मार्टली डिफाइन करेंगे। तो व्हाट आई विल कमेंट, किसी ने ये स्टेटमेंट किया मुझसे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रेक्विजिट फॉर डेमोक्रेसी, तो माई काउंटर कमेंट विल बी इट इज नॉट द ओनली प्री रेक्विजिट। तो you should know where to see, and questions are like traps. You will get too much overpowered by judicial independence and democracy. But there is one word which you think is a normal connecting word, but there lies a key. अगर तुमसे कमेंट क्वेश्चन होता है तो हमेशा ऐसे सोचो, मुझसे कोई ये कह रहा है तो मैं उसको जवाब क्या दूंगा? That yes, it is very important for these reasons, but it may not be the only. You cannot have a one factor based reason. Lot of things will be required. Democracy will not come. It is again saying constitutionally guaranteed independence. तो constitution guarantees India's independence, but our democracy may be suffering from lot of weaknesses. Fine, it means there is something more. There has to be a education of citizens. There has to be healthy political culture. So some other, how I look at this, so we do have a constitutionally guaranteed judiciary, but in itself doesn't mean that our democracy doesn't have problems. Means when you all were trying to have just a one directional thinking, judicial independence, democracy, yes and no and partial, you are unable to see the things holistically. ठीक है, तो पहले आप ये हमेशा कमेंट क्वेश्चन में हमेशा ऐसे सोचना है कि किसी ने ऐसे बोला है तो व्हाट आई विल आंसर। तो अब ऐसे लग रहा है तो कमेंट है, ये तो है 1000 देशों में, पाकिस्तान में भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, बट व्हाट अबाउट प्रैक्टिस? प्रैक्टिस में बी डिफरेंट। तो political system will be shaped even by extra constitutional factors too, and they play a bigger role, especially those who are political science students. When we will do, or we have done in any class, systems approach, fine, systems approach gives us this conceptual framework, though we don't have to mention this, but we can analyze this. Fine. So in the first paragraph, I will talk something about democracy, which makes sense to connect with judicial independence. ठीक है? तो first paragraph में democracy. तो what will you talk about democracy? क्या है डेमोक्रेसी? आपके बाद आपका पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से इमेज बन जाती है, फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन। और डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग बचपन से सुनते आए, तो इसका मतलब है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, तो डेमोक्रेसी ऐसे में या कहीं भी आप हर चीज की तो अच्छी रीडिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज हैं, जेंडर जस्टिस, डेमोक्रेसी, for which to have a good language and vocabulary, you must read something जिससे कि थोड़ा कुछ हम स्पेशल अट्रैक्शन कर पाए। तो what will you talk about democracy? आप इस क्वेश्चन को देख के डेमोक्रेसी के बारे में क्या दिमाग में लिखने का मन कर रहा है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच एवरीवन राइट्स। I am not looking for any Tom, Dick and Harry. मुझे तो एज अ एग्जामिनर स्पेशल लोगों को लेना है और बाकियों को हटाना है।
तो आप डेमोक्रेसी की तरफ आपकी सोच क्या है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब ये सोचो मेरा आंसर और क्लास 5th के बच्चे के आंसर में फिर क्या फर्क? Democracy is linked with liberal ideas and like justice, rule of law. फील करो आपके लिए, मतलब बेस्ट थिंग इज कि आप फील करें, डोंट गो बाय सम स्टेटमेंट्स। आंसर जो है ना आप दिल से लिखिए, दिमाग से लिखिए, मन से लिखिए, उसमें इन्वॉल्व होके लिखिए, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि पर्सनलाइज करो। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी फॉर यू? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, It curbs rule. It curbs government to be turn out to be a dictatorship. पर्सनलाइज इट। यू वांट टू से समथिंग? इनको देना पीछे। पर्सनल मतलब डेमोक्रेसी इज सच अ इंपॉर्टेंट थिंग। और एक और फॉर्मूला बता देते हैं, whenever you discuss democracy or anything, there is always a ends means thing. Democracy will be also for something else, which you may be valuing liberty, which you may be valuing your dignity. So give something original straight from your heart. This is how democracy matters. Yes. Ma'am, it is a government in which form of government in which a government is limited by the constitution so that the people can get. There is nothing interesting. Give to him. Ma'am, democracy in narrow form, it is known as it's a form of government. But if But you see in broad sense, it gives empowerment of people. So why because- you just don't limit to empowerment of people? Fine. Now to it, nothing is impressive. Fine. Abraham Lincoln's, you are not feeling democracy. I just said democracy linked to dignity, freedom. It can be. Try to personalize, show your sense of involvement with that. Yes. Ma'am, अच्छा बस Ma'am- छोड़ो, ma'am, नहीं होगा तुम लोग। ma'am, democracy is a instrument. Democracy is an instrument of government which people choose, which give them equality. हम तुमसे पर्सनल लेवल पे पूछ रहे हैं, पर्सनली आपके लिए Ma'am, कितना voice of important people. है? पीपल में क्यों जा रहे हो? मतलब अच्छा नहीं, छोड़ दो, अब गया मौका। अच्छा वो पूछो। आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अच्छा ठीक, चलो छोड़ो, ठीक है, अब हो गया। आप नॉर्मली एक बता दे रहे हैं, एक तो ट्रेडिशनल याद रखो, ठीक है, कि डेमोक्रेसी एज ही सेड जस्ट नॉट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट अ वे ऑफ लाइफ या कुछ भी। अगेन वाई डेमोक्रेसी इज वैल्यूड, ठीक है, बिकॉज no other form of government gives so much scope for person's liberty, for person's dignity. Fine. It now there are normal ways you can use Churchill's statement that democracy is the worst form of अभी लिखो नहीं, मतलब सोचो क्या सेट हो सकता है, तो समथिंग दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इट इज बेस्ट टिल वी डू नॉट फाइंड समथिंग बेटर। और इन मोस्ट ऑफ योर आंसर्स यू कैन जनरली स्टार्ट, मीन्स आप आगे घर जाके या जब भी टाइम मिले कुछ अच्छे लोगों के राइटिंग्स पढ़ने चाहिए ऑन डेमोक्रेसी। तो one person is Amartya Sen, and Amartya Sen's statement fits in most of the question that democracy not only has the instrumental value and educative value, but it has its own intrinsic value.
means democracy is a value in itself, because democracy gives you a sense of well-being. फाइन, या तो ये चीज कई जगह आप यूज कर सकते हैं, या अगर ये चीज बहुत सारे लोग यूज करने लग गए तो यू कैन स्टार्ट अगेन द स्टोरी अबाउट डेमोक्रेसी विथ अमर्त्य सेन्स वर्क on poverty and famine, where Amartya Sen says that in democracies famines do not happen. This itself shows that not only in terms of its administrative value, democracy is a very important or the most important mechanism which allows a person to live a life of dignity. Okay, so try to see ki how do you look at democracy, because in number of classes I said educative instrumental value, so the new way can be Amartya Sen's essay itself shows how democracy is the best form of government, because it is the best way to provide a sense of well-being and a good life. ठीक है, तो अगर आपको डेमोक्रेसी पे अच्छे एसेज एक दो या कुछ राइट अप्स पढ़ने हैं तो अमर्त्य सेन पढ़ना चाहिए. एक और पर्सन है लैरी डायमंड, बट ही राइट्स इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो अब हम यहाँ से पहले लिख सकते हैं, तो इसमें ये दो चीजें लिख सकते हैं कि राइट according to Amartya Sen, democracy not only has instrumental value, comma, educational values या educative values, but also intrinsic value. ठीक है, ये एक नॉर्मल हो सकता है, बट एक ऑल्टरनेटिवली इससे स्टार्ट करते हैं दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द importance of democracy, we can talk with reference to Amartya Sen work on poverty and famines, which established that no democratic country, poverty and famine, ये एग्जैक्ट टाइटल नहीं, आप देख लेना, मैं आइडिया दे रही हूं बस, which shows that he established that no democratic country has faced famines. ठीक है, तो famines results into loss of life. So democracy is important not just for safeguarding the liberty, but also the very existential and the very basic right to life. ठीक है, इसमें लिख सकते हैं it shows that democracy is valued not because of the freedom, but because of its ability to secure the most fundamental of all rights.
that is right to self preservation. ठीक है, अब ऐसे भी आए तो भी आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं. तो थोड़ा रीडिंग की क्वालिटी, अगर अब इसमें से कैसे भी ढंग से हमें ऐसा करना है, प्री रेक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी. फाइन, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट constitutionally guaranteed judicial independence as a prerequisite. Fine. So we can say that there are various prerequisites of democracy and judicial independence is one of them. ठीक है, तो next में I should say a connecting line which connects this. ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, राइट, देयर आर वेरियस प्रीरेक्विजिट्स ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एक्टिव citizenship, level of literacy, comma, economic development, development, comma, however. अब ये सारे फैक्टर्स कौन से हैं? सोशल फैक्टर है, सिस्टमिक फैक्टर है. जुडिशरी कौन सा फैक्टर है? इंस्टीट्यूशनल है. ठीक है, तो हाउएवर इफ वी लुक एट इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, जुडिशरीज इंडिपेंडेंस बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो मैं सिर्फ आइडियाज दे रही हूँ आपको, आई एम जस्ट गिविंग यू वोकैबुलरी कि क्लासीफाई करें. You know, you should show you classify your knowledge and then you put it. ठीक है, तो right, however, the most important institutional factor is constitutionally guaranteed judicial independence. Next, you need to talk about judicial independence. So what will you talk about judicial independence? इसके बारे में, judicial independence, does it flow from some theory which is mentioned in your syllabus? Separation of powers. So the entire idea behind the judicial independence is the theory of separation of powers, because that is considered as the guarantee of protection of liberty by Montesquieu and hence democracy. Then you can say, is it India specific question? Not necessarily. That different countries adopt different ways to ensure judicial independence, like in terms of appointment, security of tenure, financial security and other things. But we need to contextualize in India's context. Indian Constitution also creates a highly independent judiciary. So for that, you can give reference to, for example, system of appointment, transfer of members of higher judiciary, or Supreme Court and High Court enjoying power to punish for its contempt. तो अब इसको बहुत, there is no need to write about these things a lot. You have to give impression
you know the concept and you know the references. अब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स और रेफरेंसेस की जरूरत नहीं, आप आइडिया दे दीजिए कि इन इन चीजों में हमको जुडिशियल इंडिपेंडेंस दिखता है. फ्लो चार्ट्स वार्ट्स तब जब पहले पूरी बात लिख लीजिए, ठीक है. फ्लो चार्ट्स कोई राइटिंग स्किल नहीं, ठीक है. फ्लो चार्ट्स तो आपका रफ वर्क होता है. रफ वर्क को आपको मान लो चाइनीज डिप्लोमेट या किसी से डिस्कशन करना है तो फ्लो चार्ट में करोगे, ये सेंटर है, ये पॉइंट्स हैं. नो, यू नीड अ लैंग्वेज. लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट. इसीलिए फैक्ट्स, पेपर का ट्रेंड देख के आप कह सकते हैं फैक्ट्स पूछना उन्होंने प्रीलिम्स में ज्यादा चालू कर दिया है, ठीक है. तो फैक्ट्स सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए बोलना है. तो n नंबर ऑफ फैक्ट्स हैं, ट्रांसफर है, सैलरी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, सारे नहीं लिखने, 5-6 देने से इंप्रेशन आ जाता है, ठीक है. तो नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है. तो इवन इफ इट इज जनरल स्टडीज, every student knows about Montesquieu. You can write with reference to that. Yeah. You can bring, but जरूरत हो तब. फिलहाल बेसिक्स लिखो ना. पहले हमने कैसे सोचा आंसर लिखने के लिए कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस प्री रेक्विजिट है डेमोक्रेसी की. इसका मतलब है डेमोक्रेसी कोई जबरदस्त चीज है, खास चीज है, यानी कि I should know its importance. फिर हमने लिखा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस, फिर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. तो ब्रिटेन में तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो यानी ये एक बड़ी चीज हो गई. फिर ठीक है, प्री रेक्विजिट. तो फिर मैंने ऐसे सोचा कि ब्रिटेन में तो डेमोक्रेसी है, बिना इसके भी है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. तो और कुछ मतलब एक्सेप्शन सोचने होते हैं. When you will think about exception, then you will get different dimensions. If you will keep on going with the just stick to the direction of the question, तो आपको काउंटर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में, पैराग्राफ मैटर करता है, ग्रामर मैटर करता है, ठीक है. तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जुडिशियल इंडिपेंडेंस लिखेंगे. यस, ये कह रहे हैं गारंटी कर दी तो डेमोक्रेसी मिल गई, ठीक है. तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस तो डेमोक्रेसी का फीचर है ही, और बड़ा वेटेज हमने दे दिया कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे के. लेकिन तुम अपना पर्सपेक्टिव रखोगे कि इट हैज टू डू विथ समथिंग मोर. वुमेन रिजर्वेशन इज नॉट, इसी क्वेश्चन की जगह चेंज करते रहो. वुमेन रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड वुमेन रिजर्वेशन इज अ essential prerequisite for inclusive growth democracy, but constitutional guarantee definitely is important, but only that is not enough. guarantee to abolition of untouchability की भी है. is that clear? तो अब हम yes, डेमोक्रेसी के बारे में जैसे बताया कि डेमोक्रेसी का पहले लिखना है, आपने अमर्त्य सेन के पर्सपेक्टिव से समझा. बट मैम जब डेमोक्रेसी को हमने समझा था बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में, रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो ये कॉमन लैंग्वेज में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, वो आपका क्लास नहीं शो करता. यूपीएससी अप्रोच इज एलिमिनेट पीपल. तो एलिमिनेट पीपल करके कॉमन मैन और स्पेशल में अंतर डिफाइन करो. उनके पास स्ट्रॉन्ग रीजन, सारी कॉपी में लिंकन ही आता जा रहा है, तो किसी में कुछ और आएगा ना. तो यानी कि आपका अपना एक क्लास है, आप एक अलग ढंग से चीजों को देखते हो, आपको अपना क्लास भी दिखाना पड़ेगा. स्पेशली अगर क्वेश्चन सिंपल है तो आपको स्पेशल बनाने चाहिए. क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो उसको सिंप्लीफाई करना होता है. तो इसीलिए कहते हैं जो कुछ जान गए उसको छोड़ के
जो हर इंसान टॉम डिक हैरी कर रहा है वही नहीं करना है क्या है तो, लेकिन लोगों को ये नहीं आता कि कब कहां लिखना है, कैसे चीजों को कनेक्ट करना है, प्लेसमेंट नहीं आता, मैम कैसे बात करें, किस चीज के बाद कैसे करें। तो बेस्ट रहता है इसकी इंपॉर्टेंस समझाओ, फिर इसके बारे में समझाओ, फिर ये कैसे सही है, फिर ये कैसे इनफ नहीं है। 4 चीजें सोच ली हमने। यस we can give reference to Supreme Court cases like Subhash Sharma versus Union of India, रेफरेंस दे दो, लेकिन रेफरेंस where Supreme कुछ भी Court मतलब व्हेन आई थिंक, आई डोंट थिंक अबाउट फैक्ट्स पहले, आई ऑलवेज फर्स्ट थिंक अबाउट कॉन्सेप्ट्स, देन वेयर एवर माई कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी सब्सटैंटिएटेड बाई फैक्ट आई टेल। तो अगर आप फैक्ट वैक्ट में उलझोगे तो आंसर में उलझ जाओगे, फिर आप एक सुलझे व्यक्ति नहीं होगे, जिसकी जरूरत नहीं है यूपीएससी को उलझे। सरकार के काम वैसे ही उलझे, ऊपर से तुम उलझे नहीं चाहिए। ठीक है, अभी आगे अब इसी में लिख दो, अब इतने क्वेश्चन है, इसी पे डिस्कशन नहीं करो। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं द आइडिया ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस फ्लोज फ्रॉम Montesquieu's theory of separation of powers, which he considers as essential bedrock या essential मतलब which he consider guarantee for liberty, essential guarantee for liberty, which in itself is a drive behind democracy. Drive behind democracy is preservation of liberty. ठीक है, next is judicial independence is a prerequisite and it needs to be guaranteed. You should know what guarantees, but what guarantees why. So there can also be an angle, judicial independence, that can be thwarted by what? क्या डेंजर्स हो सकते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस को, उसको देखते हुए फिर गारंटीज की जाती हैं। ठीक है, तो व्हाट कैन बी चैलेंज टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, मीडिया। ठीक है, तो हम क्या बेटा, बायसनेस इंडिविजुअल जजेस की नहीं, हमें यहां पे जैसे इंस्टीट्यूशनल लिखना होगा, जजेस का भी कह सकते हैं, लेकिन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की गई, गारंटी किससे की गई कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, द अदर 2 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट इम्पैक्ट द जुडिशियल इंडिपेंडेंस। वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन जैसे क्यों हम पर्सन को क्यों नहीं ज्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं, क्योंकि फिर वर्ड लिमिट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हमको कहां से मिली कि एग्जीक्यूटिव कैन नॉट डिक्रीज द बजट, लेजिस्लेचर कैन नॉट रिमूव द जजेस सिंपली। इस सेंस में पहले डिस्कस करो, पहले एसेंशियल नॉन एसेंशियल डिफाइन करो। ठीक है, तो जब हम इसकी गारंटी पे आएंगे तो कौन कौन थ्रेट है और कैसे कैसे गारंटीड है। ठीक है, या फिर हम और डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस।
ठीक है, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस गिव्स या स्ट्रेंथेंस legitimacy, faith of the people in the system, and the threat to judicial independence may come from other institutional actors like legislature and executive. ठीक है, इंक्लूडिंग मीडिया या पब्लिक, ये सब चीजें. ठीक है, तो हम इसका फायदा भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज वैल्यूड बिकॉज it preserve the faith of the people in the system and ensures the rule of law. तो जो खुद डेमोक्रेसी की गारंटी है. ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ, जुडिशियल इंडिपेंडेंस कैन बी threatened by institutional and extra institutional factors. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ. अब हम को दो बार लिखना पड़ेगा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, फिर हमें इंडिया वाला भी लिखना पड़ेगा. तो हम इंडिया के एग्जाम्पल के थ्रू ही लिख देंगे जिससे वर्ड लिमिट हमारी बच जाए. ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम कह देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस in following ways. Point number 1, system of appointment and removal is such that judges are not at the mercy of executive and even a special majority will be required in legislature और पार्लियामेंट, जो भी आप लिखना चाहें. ठीक है, इनको रिमूव करने के लिए. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी is important element of judicial independence which is ensured by the provisions like वन टू या ए बी कर दीजिए, ए, राइट, सैलरी एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी reduced to their disadvantage with the exception of financial emergency. Exception of financial emergency. Next, the salary
is charged upon consolidated fund of India. अब उसकी समझ लिखना इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे उस चीज को समझ के लिखिए. थर्ड है, राइट, इन ऑर्डर टू मेंटेन the dignity of judiciary from prejudiced attacks, मीडिया से या ऐसे, कॉमा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ mechanism for the punishment for the contempt of the court. ठीक है. अब फंक्शनल ऑटोनॉमी, ठीक है. सो जुडिशरी enjoys functional autonomy with respect to the judiciary enjoys functional autonomy with respect to internal administration, the appointment, transfer, etc. of its staff. इंटरनल स्टाफ, ये सब जो बेंचेस हैं और ये सब आर्टिकल 145 के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें. तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, फंक्शनल ऑटोनॉमी है, तो ये सब कुछ रेफरेंसेस हम दे सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज हाउ जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज गारंटीड. ठीक है. तो ऐसे मान लीजिए यही क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में आता है, तो पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में यू कैन राइट कि प्रताप भानु मेहता सेज दैट, या देवेश कपूर, इन लोगों के जो बुक्स हैं उसमें कि इंडिया हैज क्रिएटेड अ वेरी फियर्सली इंडिपेंडेंट जुडिशरी. वी डू नॉट सी सच अ हायर लेवल ऑफ, सच अ स्केल ऑफ इंडिपेंडेंस द वे इट इज देयर इन इंडिया. मतलब एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट जुडिशरी. ठीक है. अब हम इस पे आते हैं, प्री रेक्विसिट ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है. तो इसमें हम कह सकते हैं, राइट, हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज आर नॉट sufficient in themselves until and unless there is a willingness in the judiciary to assert its independence. For example, till 1967, Indian judiciary was seen as more passive. ठीक है. तो there was always a question as if judiciary is, or the executive is calling the shots till 1967 or till 73. ठीक है. फिर लिखो, राइट, similarly it is expected that the other two branches of government do not undermine
judicial independence. Next, at the same time, judges have to ensure through their conduct and judgments that they do not give the impression of biasness. ठीक है, because it is said that justice should not only be done, it should be seen to be done. ठीक है, तो ये जुडिशरी, तो डिफरेंट एंगल्स के आप बात कर सकते हैं. ठीक है, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, and if judicial independence does not exist, it may put a very question mark on the system. ठीक है, तो एक लास्ट में ऐसे लिखो, to conclude it can be said that constitutional guarantees provide the legal framework yet other yet enabling environment is also essential. कि भाई सब लोग अपनी अपनी सीमा में रहें. इनेबलिंग एनवायरनमेंट, तो ऐसे शब्द इनेबलिंग एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, स्ट्रक्चरल, ये ऐसे शो करता है आपकी एक अच्छी वोकैबुलरी और सोच को. अब इसमें एक चीज मतलब जुडिशियल इंडिपेंडेंस ही क्यों इंपॉर्टेंट बहुत मानी जाती है, और कॉन्स्टिट्यूशन को जुडिशियल इंडिपेंडेंस गारंटी करना क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज बिलीव्ड, ऐसे कहा जाता है. क्या तुम कहने वाले थे? अच्छा, तो ऐसा कहा जाता है कि जुडिशरी इज द वीकेस्ट ऑफ द टू ब्रांचेस. क्यों? बिकॉज नीदर जुडिशरी हैज अ स्वॉर्ड नॉर जुडिशरी हैज पर्स. फाइन, तो judiciary needs to be protected by the constitution. ठीक है, तो लास्ट में जानकारी के लिए लिख लो कि judicial independence is given too much importance because judiciary is supposed to be the weakest of the three, because it neither has the sword nor the purse. मसल पावर भी नहीं है, मनी पावर भी नहीं, नॉर द पर्स. ऐसा कुछ आंसर सोच पाते तुम लोग? कभी भी नहीं. ऐसा मत कहो, लिखते हैं लोग लास्ट तक, जब टेस्ट कॉपीज आती है तो लिखने लगते हैं. ऐसा है, हम दिखाएंगे. तो लेकिन पहले ऐसा सोचना स्टार्ट करो, थोड़ा रीडिंग बढ़ाना पड़ेगा. रीडिंग इज एसेंशियल. कम से कम यही सोच लेना, कॉम्प्रिहेंशन पेपर की तैयारी कर लें, लेकिन पढ़ लो. अब इसमें कौन से फैक्ट रटने की जरूरत, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ उसकी जरूरत होती है. दे तो दिया इनेबलिंग एनवायरनमेंट,
totality. तो अब वर्ड लिमिट में आपको ये तो हमने और आइडिया दिया है, इसमें आपको अपनी स्किल डेवलप करके और कम लिखना है. आंसर शुड नॉट बी डिस्क्रिप्टिव, आंसर शुड बी एनालिटिकल, where you give concept, use facts to substantiate it. There is no need that you write everything, but write something which catches the attention. Last में मान लीजिए लिख दीजिए judiciary doesn't have sword or purse. इतने में ही बात इंपॉर्टेंट हो गई कि भाई इनको गारंटी दिलवा दो. ठीक है. तो स्टाइल ऑफ राइटिंग, आइडियाज, तो राइटिंग बिना रीडिंग के थोड़ी आती, और वही काम लोग नहीं करते, वही ये पेपर करवाने चाह रहे हैं. ठीक है. अब ये बहुत फैक्चुअल है, सर कर देंगे. हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव. हाँ जी. व्हाट? इजराइल वाला. हाँ, कर सकते हैं, बट वही करोगे, बाकी का क्या? एग्जाम्पल दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते हो? दे सकते हो. हाँ, अब आगे बढ़ते हैं. हाँ, और भी काम है मेरे पास, इसलिए क्या बोल दो, हमको पूछना ही पड़ता है. हाँ, तो डिपेंडेंस रहने के लिए तो ऐसा मतलब ये तो मैटर सब कुछ नहीं लिख सकते ना, आपको चूज करना होगा आप क्या लिखेंगे. लिखने के लिए तो इस पे पीएचडी लिख दो, लेकिन हाउ यू हैव टू थिंक, शो योर लाइन ऑफ थॉट. चलो अब आगे आते हैं. स्टेट्स इन इंडिया seem reluctant to empower urban local bodies both functionally as well as financially. Comment. स्ट्रक्चर में आप क्या पहले लिखते? अब फिर है कमेंट, टिप्पणी कीजिए, ऐसा सही है, नहीं है, क्यों है, क्या है. तो स्टेट इन इंडिया सीम रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज. किसको सेंटर में रह के डिस्कशन हो रहा है? अर्बन लोकल बॉडीज, बोथ फंक्शनली एंड फाइनेंशियली. फंक्शनल, फाइनेंशियली इनके पास पावर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये अपना काम कर पाएंगे मान लो. और स्टेट, अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है? कमेंट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो टॉपिक है, क्वेश्चन में मुद्दा क्या है? व्हाट इज द इशू? हाँ, तुम लोग ज्यादा ध्यान फंक्शनल फाइनेंशियल पे दोगे या seem reluctant? हाँ, तो यानी कि इससे भी ज्यादा क्या है? दे seem reluctant. सीम है तो जरूरी नहीं, वेरिएशन नहीं हो, वेरिएशन भी हो सकता है. डिफरेंट स्टेट्स may vary, there is a devolution index also. Fine. Now you have to find out from where this reluctance is coming, why are they reluctant, and what is to be done so that this reluctance may go. So why states are reluctant? Because states in India are themselves
seen as glorified municipalities. ठीक है, जब इनकी खुद की कुछ पावर नहीं तो ये बेचारे कैसे देंगे? तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? सेंटर शुड डिवॉल्व पावर टू द स्टेट्स एंड स्टेट्स टू लोकल बॉडीज. प्लस अगर स्टेट रिलक्टेंट है तो फिर कुछ और तरीके से यू कैन एम्पावर फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली. तो इसका हमने एक सोच लिया, रिलक्टेंस क्यों है स्टेट में अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल फैक्टर्स. तो कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स ये है कि दे देमसेल्व्स आर सो मच फाइनेंशियली डिपेंडेंट. फ्रॉम वेयर आर दे गोइंग टू गिव? एंड एज जीएसटी एंड अदर रिफॉर्म्स that states economic situation has further become weak and they themselves lost lot of autonomy. ठीक है, तो ऐसे सोच लिया कि यहाँ पे लेके आएंगे, इंटरप्रेट करेंगे. तो अब हम आंसर लिखते समय क्या लिखेंगे? अर्बन लोकल बॉडी एंड द नीड फॉर इट्स एम्पावरमेंट. दिस इज माई फर्स्ट चैलेंज. Urban local body and the need for its empowerment. Okay, so now what should I talk about urban local bodies? Structure लिखो. पहले किसके बारे में लिखोगे? अर्बन लोकल बॉडीज में. अगर मुझे अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में बात करनी तो कहानी मतलब यू हैव टू स्टार्ट अ स्टोरी. आंसर कैसा होना चाहिए? स्टोरी की तरह. और उससे ज्यादा एक्सपर्टीज आ गई तो पोएट्री की तरह. ठीक है, क्यों? क्योंकि मे बी इन सम क्लास आई टोल्ड कि किसी ने एरिस्टोटल को अप्रिशिएट किया था, मोस्ट प्रोबेबली सिसेरो या किसी ने, कि एरिस्टोटल्स आइडियाज, if Plato's ideas are like prose of silver, ठीक है, Aristotle's ideas are like flowing river of gold. तो that is a art of writing. इतनी वैल्यूएबल हो जाना चाहिए. वैल्यूएबल मतलब कीमत, मार्क्स गिरे. मार्क्स गिराओगे कैसे अगर तुम्हारे आंसर का स्तर ही गिरा है? ठीक है, तो आंसर का स्तर बढ़ाना है तो रीडिंग करनी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं. यू हैव टू डेवलप द लैंग्वेज. ये ओपिनियन से सब पता होने चाहिए. ठीक है, तो इसलिए स्टोरी बिल्डिंग करनी है, नैरेटिव बिल्डिंग जिसको कहते हैं. स्टोरी बनाइए. तो स्टोरी हम क्या बनाएंगे? अर्बन, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट अर्बन लोकल बॉडीज, व्हाट शुड आई टॉक दैट पीपल शुड लिसन? Its importance. तो urban local bodies importance lies in what? Not in local issues. सुनो, तो urban local body है, 3 शब्द हैं, इसमें कोई तो सब पकड़ो. अर्बनाइजेशन. तो अर्बनाइजेशन, उसका इंपॉर्टेंस. हम जाएंगे, मान लो किसी से कहेंगे हमको ज्यादा फंड्स दो इस चीज के लिए, तो पहले वो पूछेगा इसको क्यों दे, पंचायत को क्यों नहीं दे. तो आपको वो अर्बन लोकल बॉडी बताया गया, तो पहले आप अर्बन तो बताइए. अर्बन का क्या इंपॉर्टेंस? इकोनॉमिक ग्रोथ है, ग्रोथ पे सब कुछ है. ठीक है, सेंटर्स है. प्लस अर्बन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या करना होगा? प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर, बेसिक सर्विसेज, प्लानिंग, लैंड प्लानिंग. तो हु कैन डू दैट? द गवर्नमेंट. यू नीड डिसेंट्रलाइजेशन बिकॉज some of the cities in India have a population, some of the, in fact, which is more than the total population of certain countries, and state is more, having more population than countries. So state cannot provide
the administration at the मतलब ग्रास रूट लेवल पर तो थ्योरेटिकली नहीं हो सकता पॉसिबल। तो सबसे पहले अर्बन लोकल बॉडी को, तुम सेक्रेटरी ऑफ अर्बन लोकल बॉडी हो, तुमको फाइनेंस कमीशन से पैसा निकलवाना है जिससे तुम्हारा घर बन जाए अच्छा सा, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन वालों को कुछ तो कहानी बतानी पड़ेगी कि सर आपके बच्चे यहीं पढ़ने आएंगे, अर्बन अर्बन अर्बन। तो अर्बन अर्बन वाले, अर्बन सेक्रेटरी, रूरल सेक्रेटरी, पैसा कौन ले जाएगा? जो बढ़िया कहानी सुनाएगा। तो वो सुनानी पड़ेगी ना स्टोरी। अभी तक किस पर डोमिनेंट है? राइट टिल नाउ वी आर बीइंग, देयर इज टू मच और द ग्रेटर फोकस हैज बीन ऑन रूरल एरियाज, ठीक है। तो पहला तो हमको लिखना होगा अर्बनाइजेशन, अर्बन लोकल बॉडीज पर, ठीक है। तो आई विल टॉक अबाउट अर्बनाइजेशन, देन आई विल टॉक अबाउट अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो टॉक अबाउट अर्बनाइजेशन, तो इसमें क्या बताएंगे? कुछ भी ऐसा कुछ स्टोरी बना दो कि as a society moves towards modern या towards modernization, comma, urbanization becomes essential, full stop. In present times, urban centers are to be seen. How do you see? भाई तुम जैसा सोचोगे वैसे ही हम नहीं सोचेंगे, कुछ और बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे खुद से डिबेट किया करो। कोई बोलेगा आर टू बी सीन एज सेंटर ऑफ ग्रोथ, वो तो हमेशा से हो रहा, बट हमेशा से किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस करने के लिए एक शब्द बोल दिया करो, स्ट्रेटेजिक, ठीक है। तो क्या लिखा है हमने? आर टू बी सीन नॉट जस्ट एज centers of growth या economic growth, but from a strategic point of view, in context of a attracting foreign investment. One country invest in other country only for money, strategic. In terms of foreign investment, B, लिखो right, there has been a growth of sister city concepts, growth of sister cities concepts, sister city, व्लादिवोस्टॉक, वाराणसी या कियोटो, और क्योंकि डिप्लोमेटिक एंगल से अब देखा जाता है, ठीक है। सिस्टर सिटी कॉन्सेप्ट्स मतलब शो हाउ यू हैव लुक्ड एट अर्बनाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, लिखो राइट एज, या नेक्स्ट हम इंडिया से कॉन्टेक्चुअलाइज कर लेंगे, दैट इंडिया इज फास्ट अर्बनाइजिंग and it is expected that in coming times
40% of the population will be living in urban areas. Right? Even at present, urban areas contribute to 2/3 of India's economic output. Right? Between 2018 to 21, rate of urbanization has increased by 7.1% के रेट से ग्रो हो रहा है. एक डेटा ऐसे ही लिख लो, आगे कभी भी काम आएगा. दैट एज पर 2011 सेंसस, current population, या मतलब population has been, urban population is 37.7 crores. 37.7 crores projected to become 60 crores by 2030. तो massive urbanization is happening. ठीक है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं कि स्टेट इज रिलक्टेंट. तो हम लोग लिखेंगे अर्बन गवर्नेंस इज अ स्टेट सब्जेक्ट. ठीक है. बट स्टेट्स इन इंडिया आर एज गुड एज सम कंट्री इन द अदर वर्ल्ड. तो इससे हम लिंक कर देंगे. तो इसमें लिखते हैं कि अर्बन गवर्नेंस is a state subject. ठीक है. मतलब मोस्ट प्रोबेबली एंट्री नंबर 5 इन स्टेट लिस्ट. ब्रैकेट में अगर ये सब याद है तो अर्बन गवर्नेंस, रूरल, इन सब का थोड़ा डेटा ऐसे लिख लेना चाहिए. ठीक है. एंट्री नंबर 5 इन स्टेट लिस्ट. राइट. हाउएवर, it is to be noted that in terms of population, states in India are bigger than many countries. ठीक है. फिर this itself shows the scale of the challenge and the necessity of efficient system of governance at the grassroots level. ठीक है. अब ऐसे जरूरत नहीं, लेकिन एक एंगल बताया दे रहे हैं, वो लिख लो. इन कंपैरिजन टू
rural governance, urban governance is always more complex because more objectives are involved into it. More objectives, यहाँ growth बहुत सारा objective होता है, are more complex because more objectives are to be achieved. रूरल से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सर्विसेज की, सिक्योरिटी की, गवर्नेंस की, इकोनॉमिक ग्रोथ की चाहिए होती हैं. ठीक है, तो अब इसी में है कि वी रिक्वायर अ वेरी साउंड अर्बन गवर्नेंस सिस्टम if we want that, or if we want to attract the foreign investment, if we want to make India a developed country, so you have to take the improvement in urban administration or governance not in a very routine way, in a very strategic manner, and the time is running very fast. ठीक है, तो उस चीज की सीरियसनेस को कॉन्शियस कराओ. ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं नेक्स्ट इज इफ वी वांट टू अचीव द गोल ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी, even 5 trillion economy, developed economy, or becoming 5 trillion economy, we cannot but look at the entire governance, from strategic point of view. तो अब हम सीधे अर्बन लोकल बॉडीज पे आ जाएंगे. ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे 74th अमेंडमेंट के बारे में, लेकिन उसको एक बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे. ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो इंडिया टुक अ रेवोल्यूशनरी स्टेप towards improving urban governance when it introduced 74th Amendment Act 1992, giving a constitutionally guaranteed status to urban local bodies defined as municipalities and municipal corporations under the act. जब भी कभी डिसेंट्रलाइजेशन आए, अर्बन मतलब आए, तो एक प्रिंसिपल हमेशा लिखना चाहिए. ठीक है, विच इज कॉल्ड एज सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल. ठीक है, जो तुम्हें हमेशा मिलेगा इन ARC रिपोर्ट्स, कहीं कहीं कोई भी अच्छी किताब होगी उसमें रेफरेंस जरूर होगा. ठीक है, तो अब बता रहे हैं, मतलब सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल वही डिवोल्यूशन का प्रिंसिपल होता है. ठीक है, तो अब लिखो राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ
74th Amendment Act is based on the subsidiarity principle of good governance, decentralization, subsidiarity principle of गुड गवर्नेंस. गुड गवर्नेंस के लिए सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल चाहिए होता है, मतलब जितना ज़्यादा आप डिवॉल्व करेंगे या डिसेंट्रलाइज करेंगे. अब हम यहाँ से लिंक कर देंगे, स्टेट्स आर रिलक्टेंट. ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि दो 74th अमेंडमेंट एक्ट क्रिएटेड the optimism about the sound local governance yet the actual performance of these bodies led to the realization that states have not done sufficient amount of devolution of powers, functions, funds, and functionaries so that these bodies become effective. Next paragraph. Since India is a federation and municipalities come under state list, comma, until and unless state governments show the necessary willingness to empower these bodies, the experiment will remain half-hearted and performance will remain below potential. ठीक है, right? Though we also see variations among the states as well as among municipalities within states. ठीक है, अब इसमें राइट सम ऑफ द success, yes, some of the good examples have been the BMC, comma, the Municipal Corporation of Ahmedabad,
Pune and Bangalore. Pune and Bangalore. ठीक है, right? Next paragraph, right? Though states have a key role yet we need to look at things from holistic perspective. Full stop, लिखो, right? Apart from state, right? There are problem lies in extremely centralized model, extremely centralized model, right? Often states are called as glorified municipalities. So, without devolution of powers, from union to states, we cannot expect devolution from state to local bodies. From state to local bodies. ठीक है, अब लिख सकते हैं, right? The reluctance of states is evident from the reports of finance commissions which show that, because जो finance commission is also to give recommendations, तो वो state finance commission उसकी हालत करते हैं. ठीक है, तो क्या लिखा है? Show that there is a huge irregularity in constituting state finance commissions, quality of manpower, degree of autonomy, and the presentation of reports. Presentation of reports. ठीक है, next, right? The studies show the obstructive attitude. Studies show the obstructive attitude of bureaucracy towards the representatives. ठीक है, next, right? It is believed that there is a lack of adequate capacity and training
among the representatives which can enable them to work efficiently the state of accounting and auditing is also not up to the mark. ठीक है, अब इसमें कॉन्क्लूड कर सकते हैं, राइट राइट 10 it is true that enough devolution has not happened from the state governments in terms of functions, funds and functionaries, but that is not the only problem. और क्या प्रॉब्लम? सेंटर, ब्यूरोक्रेसी। इसके साथ साथ आप क्या बताना चाहेंगे फंक्शनल और फाइनेंसेस के लिए? You need to empower them in terms of functions. You need to empower them in terms of finances. What is your suggestion? ठीक है, accountability is also important. वो है, इस हमेशा ये सब बताना पड़ेगा कि डिवोल्यूशन ये सब होगा. यूनियन शुड encourage, incentivize the states, and that practices have been proposed by Finance Commission in terms of performance audits and all. But we require a innovative thinking, understanding the best practices, word हमेशा use करो, from outside also, and what are the alternative ways in which the funds can be mobilized. Means there has been a reluctance in terms of property tax, or there are some other legalistic issues that land laws are very archaic. तो हमको कैसे मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, कुछ इनोवेटिव थिंकिंग विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड. तो थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग आंसर में एंड करो. या कर सकते हो, लेकिन किस लिए? आपने जो एग्जाम्पल दिया वो सब सोशल रिटर्न्स ही तो दे रहा है ना. पीपीपी मॉडल या इन्वेस्टमेंट, ये सारा कुछ तो रिटर्न ही दे रहा है. दैट इज अ टर्म. हाँ, तो सिंपल ये लिख सकते हो कि इट इज नॉट द प्रॉब्लम लाइज एल्सवेयर, एंड वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट ओनली state led financial powers, we require innovative ways of thinking. ठीक है, इसमें लिख सकते हैं, राइट. क्राउड फंडिंग वही है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस लिखो ना, मतलब अपना अप्रोच दो. इमेजिन करो कि तुम म्युनिसिपल कमिश्नर हो, तो क्या चीजें आप कहेंगे कि भाई स्टेट से पैसा नहीं आ रहा, तो क्राउड फंडिंग करो. या मेन चीज है कि
मतलब प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है, मैम बॉन्ड्स कर सकते हैं, हाँ, मतलब बहुत सारे अन्य अन्य बहुत चीजें हो सकती हैं। तो अब वो कहाँ तक, इसलिए टर्म्स याद रखो कि वी ऑल्सो नीड टू हैव सम इनोवेटिव अप्रोचेस, we need to learn from other good practices, and whenever we talk about good practices of empowering the local bodies, etc., people often talk about Brazil's laws. So Brazil has done very well. Right to cities concept है, strengthening empowering cities है। तो ये दो शब्द याद रखो, innovation and best practices. मैम Yes, मैम alternate finance mechanism apart from state like municipal bonds etc. हाँ, Can be the मतलब way. वही सब करना है, बट म्युनिसिपल बॉन्ड की गारंटी फिर यूनियन गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी ना। ये सब लास्ट कहाँ पे लिखना है, लास्ट में कह सकते हैं कि राइट बिसाइड्स, ऐसे लिखो, बिसाइड्स ब्रिंगिंग, लास्ट में बिसाइड्स ब्रिंगिंग institutional reforms, it is also essential to have innovative solutions. It is essential to have innovative solutions, encouraging public-private partnerships, better user charges, land planning, public private partnership, better user charges, better planning to increase the funds. We can learn from certain best practices like in Brazil, London, certain best practices like in Brazil, London, Singapore and others. तो अब जैसे यहाँ पे कहीं ऐसे एक दो पेज छोड़ दो, आगे घर जाके थोड़ा कहीं देख लो और क्या फंडिंग, तो वैसे अपने नोट्स। Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, the questions that ask us to comment, be it on a particular statement or a particular report, what percent of the content should be normative in nature? Like, how much content would you recommend? 20%, 30%, or should we keep it balanced, that empirical and normative? नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल। देखो, नॉर्मेटिव अलग चीज है, कंसेप्चुअल अलग चीज है। आप कंसेप्चुअल एम्पेरिकल बोल रहे हो कि नॉर्मेटिव? Should be and what it is. Empirical is not so important. You should be man of ideas. Facts तो कोई भी इकट्ठे कर लाएगा, लेकिन फैक्ट्स की एनालिसिस क्या करते हैं आप? फैक्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? एम्पेरिकल में क्या लिखोगे? और एम्पेरिकल याद कहाँ रहेगा तुमको? क्या याद रहेगा कितना फंड्स दिया, कितने, किस स्टेट में? ये सब चीजें याद नहीं रहेंगी, ठीक है? तो कंसेप्ट के सहारे से ही लिखना है। या तो आप लिखें लेकिन फिर भी कंसेप्ट तो लगेगा ही। तो एम्पेरिकली अगर लिखते तो कैसे लिखते? अगर आप जब एम्पेरिकली लिखेंगे तो वो आंसर डिस्क्रिप्टिव बन जाता है कि इसने इतना फंड दिया, इसने उतना फंड दिया है। एक तो वो डेटा नहीं मिलता ना, एग्जाम में तुम्हें थोड़ी पता है कि ये सब आने वाला है। एग्जाम में सहारा जो है वो अपने लॉजिक का है। अभी हम बता दें इतना परसेंटेज पॉपुलेशन इधर उधर, वो तो, लेकिन एग्जाम सिनेरियो में हम आई हैव टू राइट द बेस्ट इन अ गिवन सिनेरियो। एग्जाम सिनेरियो में थोड़ी आप, जैसे मान लो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आ गया, तो
क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट या ऐसे प्रायोरिटाइज्ड है कि एकदम लोग ध्यान में रखेंगे? और अगर मान लो पढ़ा भी होगा तो इतना थोड़ी तुम ध्यान में रखोगे कितने मेंबर, इंडिया कब बना, कब किया। तो प्रैक्टिकलिटी इज इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास है तो डेटा दीजिए, नहीं है तब क्या करोगे? लेकिन डेटा से भी ज्यादा समझ, चीजों की समझ होनी चाहिए, चीजों की जानकारी नहीं। जानकारी हो और समझ ना हो तो रेलेवेंस नहीं। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग, इसको देख के मुझे क्या लग गया, स्टेट है रिलक्टेंट, लेकिन उनका रीजन क्या है? सेंटर। सेंटर स्टेट मिल के भी अगर करेंगे तो चैलेंजेस इतने हैं, फिर भी इनफ नहीं पड़ेगा। तो गवर्नेंस की फिलॉसफी क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। तो उसके साथ ही आप और खुद को ऐसे पर्सनलाइज करो कि तुम होते तो तुम कैसे इसको सॉल्यूशन क्या निकालते। स्टेट तो रिलक्टेंट रहेंगे ही रहेंगे, वो थोड़ी बदलने वाले हैं। तो अब कहीं और ही हाथ पैर चलाने, तो फिर ऐसे वाइब्रेंट, जैसे गुजरात होता है ऐसे तुम वाइब्रेंट सिटी कुछ ऐसे कुछ करो। ठीक है, नाउ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट the British and Indian approaches to parliamentary sovereignty। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान है तो बेसिक क्वेश्चन। कंपेयर एंड contrast the British and Indian approaches to parliamentary sovereignty। कैसे लिखना होगा? कहां पे ज्यादा पार्लियामेंट सॉवरेन है? ब्रिटेन में, और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी है। ठीक है, तो ब्रिटिश में क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडिया ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और उनका यूनिटरी सिस्टम है, अपना फेडरल सिस्टम है। ठीक है, तो हम इसको कैसे, इसकी स्टोरी क्या बनाएंगे? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। इसका एक ग्रैंड आइडिया क्या बनाओगे जिसके अंडर में इसको डिस्कस करोगे? कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी? नो, नॉट रिक्वायर्ड। करेक्ट, इसमें सॉवरेनिटी नहीं, इसमें यह बताना पड़ेगा कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम borrows heavily from Britain because of the colonial legacy as well as the preferences of the elites. Yet there are some very fundamental differences and it is not just a photocopy. ठीक है, तो in fact India's parliamentary sovereignty and British parliamentary sovereignty has been quite similar. This was an impression, and this impression was not just among the common man, and in fact the governments in India, they tried to create this impression where Nehru time and again tried to project as if parliament is sovereign. Indira Gandhi, when she brought very drastic amendments, was also an attempt to do so because there is always a tussle of power. And quite surprising that till Golaknath case and Keshwanand Bharti case, judiciary's approach was also as if India has the parliamentary sovereignty and in comparison to US, our political system is closer to British. But
a remarkable turn and a new paradigm of understanding the things emerged with Keshwanand Bharati case, which restricted parliament sovereignty, and not just in context of ordinary laws, but also towards amendment. तो ऐसे लिखना चाहिए था, सोचा होगा सॉवरेनिटी, फिर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, फिर पता चलता है आगे क्या सोचें। अब छोड़ो, ये नहीं लिखना, चलो कम से कम इतना भी अच्छा है, ये पता चल रहा है क्या नहीं करना। वो तो पहली सीढ़ी मतलब है सक्सेस की। तुम मत बताओ क्या, अगर हमने बताया उसके अलावा बताना। We have parliamentary sovereignty with constitutional limits. In India, we have parliamentary sovereignty with constitutional limit, whereas in Britain, there What are these constitutional limits? judicial review. In तो Britain, sovereignty थोड़ी है। in Britain, judicial review is limited. चलो बस हो गया, आप आगे बढ़ते। Compare and contrast the British and Indian approaches to parliamentary sovereignty. ठीक है, तो इसको लिखाने की जरूरत या हो गया आपका, आ गया। मतलब पहले स्टोरी बिल्टअप ये आप करेंगे कि इंडियन सिस्टम और इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम takes borrows heavily from the British political system because of the experience we have started with the parliamentary form of government, and India has gone for a unique experiment of adopting a parliamentary system in a federal setup, and initially it was not clear whether there is a parliamentary sovereignty or a constitutional sovereignty, looking at the scale of the amendments like First Amendment Act introducing 9th schedule type of provisions. But that came to a halt with Keshwanand Bharati case and this particular case. This shows that there is a difference. And why there is a difference? Two reasons. Reason number one, we have written constitution. Reason number two, we have federal system. And even reason number three, we have fundamental rights which are not there in Britain. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, ये वो सर करना चाह रहे हैं, तब तक हम लोग कुछ और ये कैसे, हाँ और अच्छा करते हैं। ये करते हैं 11, Constitution of India is a living instrument. हमको तो लग रहा है कोई पढ़ने की भी जरूरत नहीं, पेपर में है, सिर्फ सोचने की जरूरत। Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society. Immense, is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. Living instrument flexible है, organic है, capability of enormous dynamism कहाँ से आ रहा है?
इनॉर्मस डायनेमिज्म, फ्लेक्सिबल भी है कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड भी है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस भी हैं. It is a constitution, parliamentary sovereignty नहीं. It is a constitution made for a progressive society. मतलब which is going to change. Illustrate with special reference to the expanding horizons of right to life and personal liberty. Which cases will you mention? Expanding horizons from A.K. Gopalan case to Menaka Gandhi case, from Menaka Gandhi case to Puttoswamy case. ठीक है, in that sense you can discuss. तो अब हम इसका कैसे क्या लिखना चाहिए था? Constitution of India is a living instrument. Actually, to know where to emphasize, try to read the statement by giving emphasis on different words अलग अलग तरीके से कि emphasis किस पे जा रहा है. Constitution of India is a living instrument with capabilities. तो क्या चीजें आप deconstruct कर सकते हैं? कीप ऑन, जो तुम जो लिखा होता वही बता देते हो दूसरी लाइन में. कुछ नया बात बताइए. स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. तो सबसे पहली बात इसमें लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी खास बात है ये. Constitution of India is not like any other constitution. हर एक वर्ड का मतलब है. Constitution of India is a living document. बहुत सारे तो रिजिड भी होंगे, ठीक है. तो इसकी हमको खासियत समझनी कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था, कैसा है, ठीक है. तो ये सब चीजें समझने के लिए आपको समझना होगा ऐसे लोगों के आइडियाज जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन कि इंडिया की जो चेंज है वो कैसा है, साइलेंट रेवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स. ठीक है. एंड what is unique about Indian Constitution, which is not there, because we have tried to bring the revolution through the Constitution. So our Constitution is transformative Constitution. खास बात क्या है? Transformative Constitution है, क्योंकि Austin says that one revolution was over, but the other to start. And which type of society we had? Traditional society. And what we wanted to achieve? A modern society. ठीक है? Through the constitutional means. That is called as experiment, India's tryst with destiny. These are certain things you should use. Illustrate with example. This vision has been taken by judiciary. Whenever judiciary has interpreted the constitutional provisions. ठीक है. तो judiciary is the ultimate interpreter of the constitution, and judiciary uses the different judicial doctrines, and it has adopted the doctrine of
living constitution, and that is why from time to time it has changed the meanings and interpreted. The living constitution का best example वही है, मेनका गांधी case. You can talk about living constitution in the form of वो जो कौन सा वुमेन वाला कौन सा केस है, टेम्पल एंट्री वाला, सबरीमाला केस, कोई भी केस, नवतेज सिंह जौहर केस, तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना होगा, पॉइंट्स वाइज बता देते हैं. तो सबसे पहले लिखना होगा व्हाट इज यूनिक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि तुम लोगों ने ये वर्ड हल्के में लिया होगा कि तो ऑर्डिनरी है, यही लिखना था, ऐसे नहीं है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है. यूनिक, यूनिक इज अदर कॉन्स्टिट्यूशंस. अदर कॉन्स्टिट्यूशंस just provide the fundamental rules governing the country. Just provide the fundamental rules governing the country. But Indian Constitution is also a means for social revolution. Means for a social revolution. Underline karo. Right? It is unprecedented. Social revolution खास चीज इसमें, ठीक है. It is unprecedented in the history of constitutionalism, where constitution has been used to transform a traditional society into a modern society, and thus Indian Constitution, termed by judiciary in Navtej Singh Johar case as a transformative constitution. अब इसको समझना होगा, अंडरलाइन को, इसको ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन. तो ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म is a doctrine of judicial review adopted by Supreme Court in multiple cases in recent times, like Sabrimala, triple talaq, Navtej Singh Johar case, in interpreting the constitution
as per the changing requirements of the country. इसमें कुछ पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज से लिख सकते हो कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, modern constitutions are social contract. One criticism to the theories of social contract is they limit the choice of the future generations. So in social contract theory or elsewhere, I told that it is said, Thomas Paine said that social contract acts as a dead weight of the past on the aspirations of the future. But by incorporating the doctrine of the living instrument, this drawback has been addressed. ठीक है, इसमें लिख लो, right? Modern constitutions are based on social contract to show that they are product of will of the people, yet one of the limitation of the social contract tradition often pointed out is that it acts as a dead weight of the past, dead weight of the past on future generation. ठीक है, लिखो, राइट फॉर्चुनेटली Constituent Assembly avoided extremely rigid procedure barring barring those provisions which have implications for federal structure. तो इतने अमेंडमेंट्स हो पाए, ठीक है. एट द सेम टाइम जुडिशरी ऑल्सो एडॉप्टेड the doctrine of constitution as a organic document. ठीक है, तो अब लिख सकते हैं, we can see the application of the doctrine in the progressive interpretation of Article 21, that is right to life and personal liberty. ठीक है.
द लैंडमार्क केसेस, सब तो नहीं लिख सकते, द लैंडमार्क केसेस आर A.K. Gopalan case 1950, when judiciary took a very dash interpretation, क्लास 6 पढ़ा है, टेक्सुअलिस्ट या लिटरल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, राइट, दिस चेंज्ड in a big way in Menaka Gandhi case, when it went beyond the literal interpretation and established that, point number 1, the doctrine of procedure established by law includes due process of law, next, right to life is not just absence of death, but to live with dignity, and right to personal liberty is not just the absence of confinement, but freedom of movement, including travel abroad, since then using the instruments of PIL, the instruments like PIL, right to life has been expanded to include right to live in pollution free environment, right to education, health, and the most recent being right to privacy in Puttaswamy case. Puttaswamy case, ठीक है, आप लिख सकते हैं 10, इसको सम अप कर सकते हैं 10, इंडिया इज अ यूनिक एक्सपेरिमेंट of the silent revolution, either through parliament or through judiciary. ऐसा सब लिख लेते तुम लोग?
सोच भी नहीं सकते, कब सोचोगे, सोचना तो पड़ेगा। तो अब 2-3 क्वेश्चन, अभी थके वके तो नहीं ना? तो थकना अच्छी बात, थकने के बाद नींद अच्छी आती है ना? तो क्या 2-3 गवर्नेंस के क्वेश्चन करो अभी सर के साथ, हैं? क्या है? नहीं नहीं, फिर बहुत सारे ऐसे खत्म नहीं हो गए, कल भी है, लेकिन 2 क्वेश्चन तो करो। अब सर आए तो 2 क्वेश्चन, जाओ सर को बुलाओ, गवर्नेंस के करो, फिर अभी हम, है वेरिएशन रखो, वेरिएशन, हमसे बोर नहीं होते। पर्सपेक्टिव क्या 2-3 करो गवर्नेंस के क्वेश्चन सर। इनको मैंने अभी ये करा है, तुम नालसा कराना चाहते, नालसा और गवर्नेंस के करा दो अभी। आई थिंक दे आर वेरी टायर्ड, तो 3 क्वेश्चंस ही कर दो, 3 या 2, हाँ 2 क्वेश्चंस, 1। स्टेट ऑफ माइंड हो ना हो, दे हैव टू डेवलप एंड्योरेंस। अभी नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो कब करेंगे? बस जो नहीं करने की इच्छा हो और वो कर ले इंसान, उसी से प्रोग्रेस होती है। मतलब ऐसा मेरा सोचना है।